Students, welcome back. Today we are going to start the new topic, that is Spearman's rank correlation method. Last time we have discussed how to find out correlation coefficient by applying Karl Pearson's method. So today let's understand Spearman's rank correlation method. In this method basically we have two formulas. First formula for finding out rank correlation coefficient. This is the formula which is given. R is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1, where d stands for Rx minus Ry. Rx means rank will be given to the values of the variable x, and Ry means rank which is given to the values of the variable y. And sigma d square, that is the sum of difference in the ranks of x and y. It means ये यहाँ पे जो d फाइंड आउट किया है उसका स्क्वायर करेंगे और उसका टोटल फाइंड आउट करेंगे. बट प्रॉब्लम arises when there is tie in observations, when observations are equal. So there we are going to apply the new formula, and the formula is in this way. R is equal to 1 minus 6 into sigma d square plus CF. CF means correction factor, divided by n into n square minus 1. For finding out correction factor, formula is given. This is the formula, m cube minus m divided by 12. Now here m stands for the number of times an observation is repeated. मतलब हमारे पास में जो ऑब्जर्वेशन है, लेट्स टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो x है उसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से 60 दो बार आ रहा है. सो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड 2 टाइम्स. सो m विल बी 2. Okay, you will understand in detail while solving the practical questions. So let's start the practical questions. And this is question from exercise 2.3, that is sum number 1, given on page number 99. In this question we have to find out Spearman's rank correlation coefficient. Now what is given in the question? We have got ranks of variable x and rank of variable y. So rank is directly given. We have denoted it by Rx and second Ry. Now the first step we have to find out difference, which I have explained in the last video. D is equal to Rx minus Ry. Rx it is here and Ry it is here. So we have to find out the difference. 5 minus 6, so it will be minus 1. 2 minus 4 minus 2. 1 minus 3, so it will be minus 2. 4 minus 2, so it will be 2. 3 minus 1, so again it will be 2. 6 minus 5, so it will be 1. So it's very simple. You have to find out difference. मतलब दोनों रैंक जो है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है. Before moving towards the next step, you have to verify the total of the difference column should always come 0. 2 to 4 plus 1 5. 2 to 4 plus 1 5. तो माइनस के टोटल 5 और प्लस का टोटल 5. सो वी आर गेटिंग द टोटल ऑफ डी एज 0. तो टोटल अगर 0 आ रहा है तो ये वेरीफाई करने के बाद में ही नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करना है. Now come to the next step. Next step will be we have to find out d square. तो d square मतलब d का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है. माइनस 1 स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, अगेन इट विल बी 4 ओनली. 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1. We have to find out the total here. So total will be 18. Now the next step,
Next step will be we have to apply the formula. Formula, it's very simple. First formula we are going to apply, R is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n square minus 1. 1 minus 6 into sigma d square. So this is sigma d square, that is 18. So 18 डिवाइड में आ जाएगा n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ऑब्जर्वेशंस को रैंक दिया हुआ है तो कितने ऑब्जर्वेशंस होंगे 1 2 3 4 5 6. सो हियर वी विल गेट 6. n का स्क्वायर तो 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 18 108. डिवाइड में आ जाएगा 6, 36 माइनस 1, सो इट विल बी 35. 1 माइनस 6 into 35, so it will be 210 is equal to 1 minus 0.5143. माइनस करने के बाद में आएगा 0.4857. तो हमें क्या करना है, लास्ट में इसे अप्रोक्स में राउंड ऑफ करना है. सो 0.48, तो 8 के बाद क्या है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9. सो इट विल बी 0.49. So this will be our Spearman's rank correlation coefficient, that is 0.49. Thank you.